अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लाइला आतिफ अगेन विद द न्यू एपिसोड ऑफ लाइमलाइट विद लाइला आतिफ ओनली एट आवाज़ एंटरटेनमेंट. Happy Women's Day to all of you. I know you're watching my show on the 9th, but हम रिकॉर्ड Women's Day पे कर रहे हैं. So हर उस औरत को जो वर्किंग लेडी है, जो वर्किंग लेडी नहीं भी है, stay at home moms हैं, they are actually the ones that who are बहुत सारी तारीफ़ के काबिल हैं. सबसे ज़्यादा काम वही लोग हैं जो कर रहे हैं जो घर पे होते हैं, because they are there 24 hours. सबकी नीड्स, किसी बच्चे की कोई नीड है, हस्बैंड की कोई नीड है, इफ़ दे आर विद देयर पेरेंट्स उनका ख्याल करना, सो इट्स एक्चुअली अ बिग जॉब. और इसके अलावा जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं लेडीज़ जो अपने घर से काम कर रही हैं, जिनके बाहर बिजनेसेस हैं, whatever job they are into it, I salute all of them and let's celebrate the day together. Happy Women's Day to all of you from our channel, from all of our team. So आज की हमारी गेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी हैं. चल के उनके बारे में हम एक छोटा सा क्लिप पहले देखेंगे. अभी मैं नहीं बताऊंगी कि हमारे स्टूडियो में आज कौन मौजूद हैं, तो चले चल के पहले एक छोटा सा पैकेज उनके बारे में देखते हैं, फिर उनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे. तो देखा आपने पैकेज, बहुत सारे लोग उनको ज़रूर जान गए होंगे और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे. वो मॉर्गेज एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंसी भी देती हैं. तो इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं अमृता भोगल. वेलकम टू द शो. थैंक यू लैला जी. थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म वेलकम. एंड जैसे लैला जी ने विश्ड ऑल द वुमेन अ हैप्पी वुमेन्स डे, आई वुड लाइक टू आल्सो ऐड टू इट. देखो, Women's Day is a day special for all of us. I mean, women तो रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, but today is a bit more special कि we can achieve anything we strive for. I 100%. always believe that. बिल्कुल सही. क्या हाल चाल है आपके? कैसा रहा आपका आज का दिन? सेलिब्रेशंस आज तो बहुत ज्यादा हर जगह नजर आ रही हैं. बहुत सारे, जहाँ देखो, फेसबुक पर देखो, टीवी पर देखो, इट्स हैप्पी वुमेन्स डे. इट्स नाइस कि टू सी के सब रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे की. देखें, हम जहाँ बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, एक दूसरे को हमें बिल्कुल विश भी करना चाहिए, उनके लिए थोड़े से कोई अच्छे बोल देने चाहिए कि किसी का भी दिन अच्छा बन जाए. ऑफ कोर्स, एंड आई फील कि हम वुमेन सपोर्ट करना चाहिए एक फॉर टू ईच अदर. बिल्कुल. तो अमृता, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग. थोड़ा सा अपने बारे में मेरे देखने वालों को बताइए. आप मेरा ख्याल है कि आप इंडिया का, आपने बताया था, बैकग्राउंड है, तो हमें बताइए कि आप कब कनाडा आई और फिर हम आगे बातों का सिलसिला शुरू. ऑफ कोर्स मेरी बैकग्राउंड इंडियन है, बट मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन केन्या हूँ, इन अफ्रीका. अच्छा. सो लिव देयर ऑल माय लाइफ. मेरे ब्रदर एंड फैमिली स्टिल बैक इन केन्या. अच्छा. सो हम कनाडा मूव हुए अबाउट 15 years ago. ओके. एंड आई एक्चुअली स्टडीड इन इंग्लैंड. अच्छा. Because you're Kenya, we followed the British system. Okay. So we followed for further education. And you're talking about which year in Kenya? born all my life. My grandparents were the first generation, so हम third generation है केन्या में. So lived there for a lot. I mean it's nice के वहाँ. How's it there? कैसा है वहाँ और यहाँ का अगर मैं comparison पूछूं, even UK का? हाँ जी, बहुत different है यहाँ और केन्या का. अच्छा. What I really appreciate केन्या का कि वो community mixed community है. ठीक है. Doesn't matter कौन सी बैकग्राउंड से, मुस्लिम हो, हिंदू हो, मल्टीकल्चरल है. मल्टीकल्चरल है और सब कम्युनिटी
they really respect each other. Okay. सब you will never वो differentiation Very friendly माहौल है. अच्छा. you know हम एक religion को we embrace it very positively. Beautiful. It's really nice, and I sometimes do wish I could bring up my kids in that background. But you know, life has brought us here to Canada. Wow. We're 15 years हो गए, and so उधर it's very nice. I mean, Canada ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, success दिया है, हमारे बच्चे getting a good education. ऐसे नहीं कोई बात है. तो आपके बच्चे केन्या में हुए थे कि यहाँ पे? नहीं, इधर हुए थे. अच्छा, जब आप यहाँ ठीक है. So अभी वो तो फुली उन्होंने बिल्कुल केन्या नहीं देखा, वापस नहीं गए उनको लेकर? हम गए हॉलीडेज के लिए ना, पर वो छोटे थे तब. एंड अभी तो कोविड के वजह से कांट इवन गो, बट हाँ जी, बट हमारा एम है कि दिस साल हम जरूर जाएंगे. वेरी नाइस. तो थोड़ा सा बताइए कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपने यहाँ पे पढ़ा पहले, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड. प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, ऑफ कोर्स मैंने हाई स्कूल केन्या में की थी, एंड देन मैंने यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में की थी, एंड मैं यूनिवर्सिटी बैचलर्स I got in banking, finance and management. Wow. And right after that, मेरे husband भी केन्या से हैं. अच्छा. So he moved here, and that's how I happened to come to Canada. And then, of course, my career started, and I started working. My first company थी energy company थी, Just Energy. And then I went on to Loblaw head office. Okay. And then TD, of course, my background was all finance. And then I thought, you know, कितनी देर मैं 9 to 5 एक job करूँगी. मेरा passion always thought to be in real estate and mortgages, because my parents be back home did a lot of properties and all, and that is how I got into mortgages. Wow, zabardast. The journey has been very successful, and I always look to, you know, connect with different people. Wow. Yeah. And you have massive experience. You are saying that your line was always finance. So आपके passion and dream के जो job मिलती है ना आपकी, मैं कहती हूँ that's the best field. Honestly, उसमें you can prove yourself. You can, and when you really enjoy something, वो job नहीं होता. Exactly. You feel passionate about it. You want to help people, because मैं क्या realize करती हूँ कि a lot of people हमारे, you know, don't educate themselves. So मेरी ये aim है, of course, business तो है, but to educate everybody. You're like me. I love to educate. Like वो जो passion होता है ना आपको educate करने का. मुझे ये बताइए कि अगर जो कोई ऐसा हमें देख रहा है इस वक्त, कोई student, कोई boy or a girl who wanted to get in the same field of mortgage. So what should be the background? Like उनको शुरू से finance में होना चाहिए या क्या है तरीका? हाँ जी, देखो लैला जी, to be honest, no, you don't have to have a background in finance, पर आपको understanding तो होनी चाहिए, right? I always believe, देखो जो books में सिखाते, जो हम license लेते हैं इसका, you have to be licensed. Okay. You cannot just decide, okay, आज मैंने agent बनना, I'm going to go join a brokerage. No, you have to be licensed. ठीक है. License लेने के लिए, I think it's the easiest part of this journey. License लेने के लिए क्या है? Training, कोई classes? It's an online course. Okay. It's an online How long? Course. I mean, वो आपके, it's up to you. आपने, you want to take 3 months, you want to take 1 month, you want to take not 6 bad. Months. It's not too bad. Okay, not that is actually long. The easiest part. I always say that too. The hard part is actually putting it into practice. Yep. Okay. देखो सीखने में को you can sit an exam, आपको 100% मिल जाता है, but now to put it in real life perspective. That's so true. Even देखिए mathematics हो गई, even my logic हो जाती है. हम अगर practice नहीं करेंगे, you are even if you learn a new language and you don't practice, you will forget. That's absolutely correct. हाँ जी. तो license लेने में कितना time लग जाता है अमृता? देखो लैला जी, it could take up to 3 months, 1 month. It's entirely up to you from the day you sign up and from the day you set your exam. Is there there is an exam? I was just about to ask. Okay. There is an exam. So how does that look like? Is there like a multiple choice question? हाँ जी, multiple choice होता है. अभी तो with COVID everything is online. Okay. जब मैंने किया था, I had to go in class and to center पर जाना. How was that? How was that experience? Loved it. अभी, you know, I didn't realize कि ये journey, where it will take me, how it will be, but I can't thank my stars. Very nice. Yes, I can't thank my stars. Absolutely. देखो, like you asked, right? What are the main parts about doing this course and how do you become successful? Like I said, easiest part is the exam. Okay. But it becomes harder when you have to get clients queue because बहुत सारे agents हैं बाहर.
एंड एज इंडिपेंडेंट मॉर्गेज एजेंट्स मेरे पास कोई टैग नहीं है कि मैं टीडी से काम करती हूँ या मैं स्कोशिया से करती हूँ या मैं कोई और लेंडर से. मेरी ओन आइडेंटिटी है एंड आई हैव टू बिल्ड दैट. एग्जैक्टली. आई हैव टू डिफरेंशिएट. यू कैन नॉट टेक अदर पीपल्स क्लाइंट एट ऑल. वो तो आपका प्रोफेशन में एंड यू हाउ विल पीपल रिमेंबर मैं कौन हूँ. आपको आपकी ओन आइडेंटिटी बनानी है इस इंडस्ट्री में. या जैसे कि आपने कोर्स कर लिया एंड अगेन नाउ यू आर सिटिंग लेट्स से, सो क्लाइंटेल आपने फिर किस तरह बिल्ड की? आपके पास पहले कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे नेटवर्किंग के थ्रू की, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. देखो दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. जब मैंने ये शुरू किया था दैट वाज माय बिगेस्ट वरी. मुझे क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? Every field you have that worry actually. It's always a worry because where am I going to get those clients? ठीक है. And I say this very respectfully, Laila ji. I never reached out to family and friends. Not कि मुझे कोई problem थी, because देखो जो mortgages है, you're sharing a lot of your financial and personal information, right? Absolutely and correct. And you don't want to make anybody feel obligated or uncomfortable कि मैंने अमृता को deal नहीं दी. Will I lose my friendship or my relation? नहीं. So I want everybody respectfully to keep that in mind. But Laila, you can always tell the same family and friends, don't hesitate to refer me to your family and friends. आपके work peers कहाँ आप काम करते हो, and you don't know where leads come from. Wow. See, बात वही की है. आप you are ready to help, but the way you told them that hey, you are not making them uncomfortable. ऐसा नहीं कि वो आपका next time phone ही नहीं उठाएंगे. But you said such a beautiful thing. If you, आप सबने सुना ही होगा कि इंस्टेड ऑफ कि आप अपने हर रिश्तेदार को फ़ोन या अपने हर फ्रेंड को फ़ोन करना शुरू कर दें और कहने लगें कि जी मॉर्गेज का कुछ करना है तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दें, बट आपने कहा कि इस तरह कह दो कि मैं आपके लिए ऑलवेज आई एम देयर, व्हेनेवर यू नीड माय हेल्प आई एम देयर. सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ अप्रोचिंग एंड गिविंग योर सर्विसेज टू योर रिलेटिव्स. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रिलेटिव्स. अमेजिंग. दिस इज एक्चुअली अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी टू. एक और चीज, नेवर बी scared कि आप कभी किसी से बात करते हैं, आपको बस they ask you a question, आपको लगता है इधर से तो मुझे कोई डील नहीं मिलने वाली, you don't want to waste. Don't be scared to share your knowledge, because आपने आज मुझे क्वेश्चन पूछा. I know you might not want a mortgage today, but today you'll be happy with me. You don't know who you're going to go talk to. Exactly. I always say, don't be scared to share. आप ये मत सोचे कि मुझे यहाँ से तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूँ. Don't be scared. Wow. You don't know where it's going to lead. Right. Be open-minded. Very nice. अमृता ये बताइए कि mortgage है क्या? हाँ जी. Like what it is. I mean, एक mortgage advisor के पास अगर मैं जाऊँ, what should be my questions? हाँ जी. क्या मैं what should I keep in mind? हाँ जी. It's very nice कि आपने ये question पूछा, especially जो हम back home से relate करते हैं. I don't remember मैंने कभी mortgage सुना था वहाँ. Because generally वहाँ you build a home, you आपके savings use करते हो. So true. We don't वो term we don't listen. पहली दफा सुनी ना यहीं आके. That's absolutely true. So to everybody, to all our listeners, viewers, देखो जो mortgage होती है ना, आज आपने घर लिया 5 लाख का. It's unlikely in 90% of the cases कि हमारे पास बैंक अकाउंट में 5 लाख पड़ा है. ठीक है. You have to have a certain amount from your own bank account, savings, sources. Right. But the rest we go to a lender, a bank, to give us a loan. So mortgage is a type of loan on your home. Okay, that's easy to understand. हाँ जी, it is a loan, but it is called a mortgage because आपके घर पर है. ठीक है, तो ये सभी को मिल जाता है. Is everybody eligible to get a mortgage? It's not as easy कि हाँ मैंने घर लेना है, मैंने $1,00,000 मेरे पॉकेट से डाल दिया, अभी मुझे 4 लाख का मॉर्गेज दे दो. No, it is not that easy. देखो बैंक्स के क्राइटेरिया होता है हाउ टू क्वालिफाई यू. वो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन आपकी इनकम क्या है, आपने डाउन पेमेंट कितनी डाली है. ऑल दिस फैक्टर्स प्ले अ रोल टू अंडरस्टैंड आप कितने से क्वालिफाई करते हो. कोई बोलते हैं हाँ लेकिन मैं 5,000 कमाता हूँ, जो मेरी मॉर्गेज 2,000 है, I can easily pay it. But banks don't look at it that way. So there is a qualifying process. There is a process. And of course, कोई भी you can always reach out. ऐसे मत सोचे कि अभी I'm not ready. Pre-plan yourself. You might be ready in a year, but you need to understand यहाँ कैसे काम करता है. What should be my next steps? We don't know. A lot of listeners don't understand this. Right. और understand
अंडरस्टैंड ना करने की वजह से बहुत से लोग अगेन एज अमृता मेंशन कि वो इंटिमिडेशन फील करते हैं, एडवाइजर्स के पास जाने से डरते हैं कि व्हाट इफ मेरे पास इनफ मनी ना हो. सो दैट्स व्हाई दे कम इन प्लेस कि आप एडवाइजर्स के पास जाएं, तभी ये लोग हैं अमृता जैसे, और ये आपको द बेस्ट सजेशन फॉर यू दे सकते हैं. सो आगे चलते हुए अगर मैं आप बताइए. एक और चीज मैंने बतानी थी. काफी बंदे मुझे पूछते हैं कि मैं आप में और बैंक में क्या फर्क है? Why can't I just go directly to the bank? मैं आपके पास क्यों आऊंगी? Look, it's a very good question. It's right. Why will you come to me when you can go walk in directly into a branch and get a mortgage? Right. Firstly, I do not charge for my services. Right. आप मुझे मेरे पास आओगे, you don't have to worry कि अमिता के क्या charges होंगे. You're scared to ask. कभी-कभी आप clients asking, please पहले मुझे बता दो आपकी क्या fee होगी. Based on that, we can proceed. But you don't charge usually mortgage advisors. Generally, mortgage agents should not be charging their clients. And आप पूछोगे, so how do you make money? देखो, when we process a mortgage, the financial institution pays us. They compensate us. I mean, there are agents who have flat fee. They charge 1,000, but I do not charge, and I don't think ethically it's right because देखो, clients be their hard-earned money is going into the mortgage. They're paying the banks. Right. So why should we absolutely charge? Makes sense. Yeah. So there's no charge coming to us, and so they're thinking, okay, bank भी नहीं मुझे charge करी, तो भी मैं आपके पास क्यों आऊँ? The reason is, कैसे बोलते हैं, we're your one-stop shop. I will search and do my homework and say what is the best product for you. आपको 5 different banks पर नहीं जाना पड़ेगा. देखना interest क्या रेट है, वो कौन सा best product दे रहे. I do that homework for you. That is the main difference. So I'm your one-stop shop, giving you the best advice. And lastly, Laila ji, sometimes I find financial institutions, जो lenders होते हैं, वो आपको वो ही बताते हैं जो उसको फायदा है. Exactly. जो हम हैं, we work for the client. उसकी need और उसकी सारी चीजें. उसके फायदे में क्या है? Very nice. And that what the client I will be looking in my advisor. यही से हम बातों का सिलसिला जारी करेंगे. वक्त हुआ एक छोटी सी अमृता जी ब्रेक का. आपकी इजाजत से हम एक ब्रेक लेंगे. मिलते हैं एक छोटी सी क्विक कमर्शियल ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज अमृता मौजूद हैं, जो कि एक मॉर्गेज एडवाइज़र हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रही हैं. आगे चल के हम उनको और मज़ीद उनसे बातें करेंगे. लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे एक मज़ेदार सेगमेंट का, खेल खेल में. अमृता, आर यू रेडी फॉर आवर सेगमेंट? हाँ जी. आई ऑलवेज लव प्लेइंग गेम्स विद माय गेस्ट बिकॉज थोड़ा सा आपको जरा कॉमन सेंस यूज करनी है. कॉमन सेंस. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 days ऑफ द वीक that starts with the letter T. एक तो Tuesday. हाँ, Tuesday और Thursday तो है. 7 days. Oh, today and tomorrow. Today and tomorrow. हाँ जी. बिल्कुल सही. ओके जी, आपसे सेकंड सवाल है. What 4 eyes? Sorry, ये वाला नहीं. Where is an ocean with no water? ये मेरे बच्चों ने भी मुझे ये पूछा है in the past and मैप पर. ओह, जबरदस्त. हाँ जी. अच्छा, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं. या they discuss कोई टिकटॉक पे कभी देख लेते हैं, फिर आके पूछते हैं. What 2 words when combined hold the most letters? 2 words, proper words. हाँ जी. अगर आप उनको combine करें so they hold the most letters. थोड़ा सा tricky है, but the answer is there. नहीं, ये मुझे नहीं पता. I'm not going to lie. Yeah. It's a post office. Oh, yes. All right. How many bricks does it take to complete a building made of brick? कितनी bricks चाहिए होंगी just to complete the building? अब मैंने बता दी है टिप एंड में. Just to complete the building. Just to complete it, how many bricks? एक ही चाहिए होगी ना एंड में. एक ही तो लगेगी. Only one. Okay, my last question is, how can a man who shaves several times a day still have a long beard? How is that possible? Trimming. But he has a big beard, but he shaves several times in a day. कैसे possible है? और उसकी इतनी big beard है खुद की. Fine. He's a barber.
Good one. Very good one. हाँ जी. All right. So अमृता, चलें, ये तो एक मजे का सेगमेंट था, एक थोड़ा सा लाफ्टर हम क्रिएट करते हैं अपने ऑडियंसेस के साथ और अपने गेस्ट के साथ. अब हम चलते हैं वापस अपने मॉर्गेज के टॉपिक पे और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ. आई केम टू अ मॉर्गेज एडवाइजर. व्हाट शुड आई लुक इनटू द एडवाइजर के मुझे उसके बारे में रिसर्च अगर मैं करूं तो मैं क्या क्या वो चीज़ें देखूं कि उस वो मॉर्गेज डेफिनेटली आई हैव टू सी दैट ही और शी इज़ अ लाइसेंस्ड. हाँ जी. बट उसके अलावा आप क्या रिकमेंड करेंगी? देखो, ऑलवेज मैं एक चीज़ बोला, ऑलवेज व्हेन यू स्पीक, देखो वी ऑलवेज जब हम किसी से बात करते हैं, राइट, you, I as a professional, आप as a client, you will be able to firstly gauge the level of knowledge the person has. ठीक है. Because देखो, it's not at the end of it, there are several agents there. First they want to see के मेरा क्या फायदा है इसमें. No, always understand. Questions पूछो, don't be scared. ठीक है. देखो, first always understand कि वो क्या आपको समझा रहा है. How much down payment, वो बोल रहा है कि नो आपको 80,000 डालना ही डालना है. ठीक है. Understand, पूछो क्यों 80, क्यों 70 नहीं. Understand करो, because जब वो आप ये first question पूछोगे, it will open the doors to many other questions. Right. Because he or she will say, because based on जो आपकी income है, you have to put this to qualify for a mortgage of 600. Okay. You see, logic. triggers other Yeah. questions. Right. Then don't, you know, some agents will just put कि आपको fixed rate लेना चाहिए, आपको variable rate लेना चाहिए. अभी fixed और variable rate में क्या difference ये है? क्या difference है? ये मैं पूछूंगी अब. जनरली जो हमारी मॉर्गेज की टर्म होती है, मीनिंग कि आपकी हमारी मॉर्गेज हमने आज ली है, दैट इज वैलिड फॉर 5 years. जनरली साल की भी मिलती है, 3 साल, बट जनरली 5 साल की होती है. जो फिक्स रेट है, जो आज आपको 3% का रेट मिल रहा है, दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट 5 years आपकी पेमेंट विल बी बेस्ड ऑन 3%. ठीक है. नो मैटर मार्केट में क्या होता है, यू नो इकोनॉमी में क्या होता है, इट डजंट मैटर, आपका रेट 3% रहेगा. So there will be no volatility, there will be no change in payment. Perfect. Okay. जो variable rate होता है, it can go up or down based on economic factors. जो भी market में चल रहा है. ठीक है. So there is always, you have to have some risk tolerance. आपको stability देखनी है. You have to look at a lot of factors कि आपको variable rate चाहिए या fixed rate चाहिए. देखो, variable rate what is a you lot, recommend? Yeah. हाँ, देखो, variable rate is a lot less today. Okay. Yeah. Than fixed rate. Our fixed rate almost 3% के आसपास है. जी. Variable rate is at about 1.5%. Oh wow! So the difference is big. There's a big difference. Yeah. So you have to see मुझे क्या चाहिए, and देखो, the agent or the person you're working with, वो आपकी individual situation he should understand. समझता है, बिल्कुल. आपकी And needs. based on that, they should guide you. देखो लेला जी, I think you should go with fixed rate. और लेला जी, देख आपको variable rate. आप variable पर जाओगे, आपकी monthly payment ये होगी. सही. Fixed में ये आपकी payment ये होगी. Right. Understand this factor. So there is a minimum down payment. Absolutely. इसका भी बताइए थोड़ा सा. हाँ जी. जो down payment होती है as a first time home buyer, the first 500,000 आपको 5% डालना है. ठीक है. So let's take an example. आज हम 8 लाख का घर लेते हैं. 500,000 पर आपको 5% है, which is $25,000. ठीक है. The next 300,000 आपको 10% डालना है, which is 30,000. Okay. So 8 लाख के घर पर you have to put a minimum down payment of $55,000. Okay, 55. हाँ जी. देखो, I have clients who call me, अमृता जी, हमने टाउन हाउस देखा है 1.1 का, हम फर्स्ट टाइम होम बायर, हमने 5% डालना है. No. And max, is there any boundary for max? There is no max. Okay. Absolutely. There is no max. The more you put down, the lower your payment, Yeah, right? that It will depends be- आपकी income क्या है. ठीक है. Remember, without income, it is impossible to qualify for a mortgage. ठीक है. So income is very important. Very nice. Borrow करने पे भी amount, is there a specification कि इतना मैं amount borrow कर सकती हूँ, और it's like वो किस तरह आप लोग calculate करते हो कि मैं कितना पैसा बैंक से borrow कर सकती हूँ? हाँ जी. देखो, those are factors that depend on आपकी income क्या है और down payment कितनी है. Okay. Those two factors will decide आपकी mortgage कितनी आप qualify कर सकते हो. Okay. It is very important to understand. Clients बोलते देखो, मेरे पास $1 million का घर है, मेरी mortgage only 200,000. आप मुझे home equity line ला दो. Okay. I said okay, no problem, absolutely we can do it. पर आपकी क्या income, मैं नहीं काम करता. पर मेरे पास इतनी equity. That is true. I appreciate and I understand clients की frustration क्या है.
but there has to be some sort of income, because banks, you have to understand, bank क्या सोच रही है, बैंक ये सोच रही है कि how will you pay this mortgage of every month? Exactly. So उनको भी तो surety चाहिए ना. देखो, I know there's a lot of private lenders and all, of course, but I'm not concentrating on that. Private lenders, they know कि आपके पास exit strategy है, or you would not borrow at such a high interest rate. Oh, okay. Because your private lenders, they're happy to give you a mortgage with minimum pay income. But इंटरेस्ट रेट भी वो इतना ज्यादा चार्ज करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज एन ऑफसेट. हाँ जी. एक और मैं बात यहीं पे इसी टॉपिक से रिलेटेड ये पूछना चाहूंगी कि मॉर्गेज हो गई, ये सारे प्रोसेस में कितना कोई टाइम लग जाता है कि मतलब मेरी क्लोजिंग भी है हाउस की, और मैं मॉर्गेज एडवाइजर से भी मेरा वो एक चल रहा है, तो एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा होता है अमृता. इट्स लाइक समझ नहीं आ रही होती अप्रूव होगी नहीं होगी, कुछ मॉर्गेज एडवाइजर भी नहीं इतना आपको बता रहे होते कि क्या होगा एंड डे तक. दैट हैपेंड एक्चुअली विद अस. I'm going to talk about it, and thank you Laila ji कि आपने ये you brought this up. First चीज, let's start. When you buy a home, आपकी closing 30 days, 60 days, 90 days, it could be even up to 120 days. I humbly request to all our listeners, don't wait. ऐसे मत सोचो मेरे पास टाइम है, I will. आपने घर ले लिया and you've bought it with no finance clause. That means it's up to you कि आपको mortgage करनी है. ठीक है. Work with a professional. Get in touch with them right away. Okay. Get in touch. Do not wait. ऐसे मत सोचो कि 90 days की closing है, 3 महीने पड़े हैं, हम कर लेंगे. अच्छा. No. Remember, Laila ji, and to all our viewers and listeners, 120 days before closing, 4 महीने पहले, you can process your mortgage. Oh. वे आप बेफिक्र होंगे. So that means हम delay खुद ही कर देते हैं. Not delay, आप नहीं करते. A lot of times agents just sit on files. Okay. I see that every day. A lot of clients आते, मुझे call नहीं चुक रहे. They're not getting back to me. No, that is where you differentiate a good agent. Right, that's a good suggestion, good tip कि आप right agent और अच्छे agent के पास जाएं, तो आपका भी time ज़ाया ना करें, end में stress भी ना हो. If you, I mean, of course, agents be busy. Get me wrong, they are busy, but they should be able to communicate. Laila ji, your process is under review. Right. He should communicate you, and they should keep you updated कि आपका application कौन से stage पर है. अच्छा, ठीक है. They should keep in touch with you. मैंने apply कर दिया है. I'm waiting for the bank to come back to me. Laila ji, I need these documents from you. Right. Because देखो, it's a two-way process. बिल्कुल. Mortgage तो as an agent they will do, but they need a lot of documents from you as clients. मैं अभी यही पूछने लगी थी. बिल्कुल. Documents में अगर आप just like a quick glance दें कि हमें कौन से ऐसे documents हैं कि जो हमें. Let's start with हम घर ले रहे हैं. ठीक है. First चीज is हमें purchase or sale agreement चाहिए. अच्छा. जो आपकी own savings है, it has to be in your account for 90 days. Okay. आप ये नहीं सोचो मई में closing है, by April I'll have saved another 10-15,000. No. Your down payment has to be for 90 days, and banks are very particular about it because money laundering ये सब बहुत होता है. Okay, number 1. You're also allowed to take gift as a down payment. Okay. So your sister could gift you a down payment, your dad could gift you a down payment. Let the agent know 50,000 हमारे own savings है, 30,000 मेरे dad हमें gift देंगे. Oh, really? You should let them know because in the application he can clearly state it that 50,000 is client's own resources. 30,000 client's dad is gifting them. Okay. Then the agent. And dad gift has to be in the bank account for 90 days as well? Okay. No, it does not have to be in the account for 90 days. So, agent based on कौन सी bank he's applying, every bank की gift letter होती है. Okay. Then he will give it to you, Laila ji. Look, ये gift letter आप आपके dad से sign करा लो. ठीक है. Or also get it from dad's account. Bank. They have to sign that dad has this much money to give Laila. Okay. Or dad has to give his statements to see he has the money. Just for the proof. Yeah. Down payment हमारी सबसे बड़ी headache है because sometimes clients, and I understand, they don't realize, but banks are very, very particular. So down payment हमने cover कर लिया, income cover कर लिया, purchase agreement cover कर लिया, and MLS listing. These are the 4 main, most important documents that everybody has to know. Laila ji, also a good agent will always take your consent before doing a credit check. अच्छा.
some agents just वो credit check कर लेते हैं आपको, you give them the phone number, आपने SIN का number दे दिया, but they should take your consent before doing a credit check. It is very important. देखो लेलो जी, not everybody can do it. Otherwise you'll be sharing your information with everybody. Yeah. Okay. You can at the moment आजकल everything's on the internet. बिल्कुल. So जो भी, ये बहुत अच्छी एक टिप बताई है बिल्कुल, कि जो भी आप अपने एडवाइजर के पास जाइए, he or she has to take permission from you. Yes. इसको मैं सिर्फ इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, which में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस कर देते होंगे. And again it's because आजकल का जो दौर चल रहा है, everybody has to take care of their privacy and documents, personal information. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने, very elaborately you told everything. और definitely I know कि बहुत सारे लोग इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहे होंगे, एंड आई नो कि आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा. सो अभी वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, अमृता जी. तो हम आपसे मज़ीद कुछ सवालात करेंगे, तो मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे साथ स्टूडियो में अमृता मौजूद हैं, जो कि मॉर्गेज एडवाइज़र हैं, और उनसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं. सो अमृता जी, आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड? Absolutely, हाँ जी. Alright, let's get to know you a little bit. What makes you angry? Lies. Okay. I cannot take lies. मुझे ये बोल दो आपने wrong किया है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा. Because I always feel एक पर एक it leads to another, and आपका trust टूट जाता है. Definitely. और एक झूठ को कहते हैं ना, छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. Absolutely. Alright. Chocolate or caramel? Chocolate. Absolutely. Very nice. What impresses you? कोई एक चीज. एक चीज? Anything that comes in your mind. I always tell you, your first impression होता है ना, it's the last impression. And it doesn't mean you have to be all tarted up. Not at all. You know, जो vibrations आती है ना किसी से, I feel it speaks volumes. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. What is better, certificates or experience? Experience, absolutely. What is better, being organized or attention to details? I think organized. Two things you would change about yourself. It's a little, maybe hard that if you want to say in front of camera, but any maybe. No, I'd be very honest. Okay. Two things, let's see. मेरे पास patience नहीं है. Okay. I'm not going to lie if somebody. I really appreciate teachers. Oh, yeah. I really appreciate teachers. The other day I was talking the same thing. कि teachers के पास बहुत patience होती है. कितनी patience है, and I commend them, and I always appreciate them because it requires a different level of patience. 100%. हर डिफरेंट मेंटालिटी का बच्चा होता है, उसके साथ डील करना. कोई बच्चा क्रैंकी है, कोई नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस लाइक हैबिट्स की अगर मैं बात करूं. That's very well said. Very well said. And the other one? The other thing I'd like to change about myself is देखो, it goes again with patience, it is tolerance. Okay. Sometimes देखो वो बोलते हैं ना, 5 उंगलियां सेम नहीं होती, so we have to be a bit more tolerating, right? And इस trade में, after having a family, I've learned a lot. But I think there's still room to change. Yeah, 100%. There's always room. Last time you laughed very hard out loud. What was that? बच्चों की कोई बात होगी? It's really मेरे बच्चों की videos ही, हम कल it was actually last night. जो छोटे थे, how बचपन की videos we were watching on my phone, and I feel bad that they're growing so fast. I know. I wish they could be the same age. बच्चों की बात ही, बिल्कुल, बच्चे तो बच्चे ही हैं. कहते हैं ना, बचपना कभी वापस नहीं आता. I really miss even my childhood too. कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, बस अपनी एक दुनिया में मस्त होते हो. It was actually मेरी daughter ने कुछ really funny she said. She said my stomach's hurting and I feel it's on fire. And my son goes, and he's only 7. He goes, my fire extinguisher now. Like, how did he even think about it? Like, is it a my God, this and he is goes, so Mommy, hilarious. I've heard you laugh after so long like this. See? Wow, so nice, so cute. What motivates you? Honestly, it is my family. They have so much pride in me, my children, my husband, and it gives me a reason. And another reason is my family. My in-laws who are here in Canada. I feel very proud. Family is your support. They're your support. They give me, it's not support by giving you business, it's the moral support you get from them. 100%. Absolutely. Very nice. Your greatest achievement? My so greatest far, if I would say.
So far maybe वैसे तो बहुत सारी होंगी, but let's honestly my greatest achievement is my success in this particular career. Wow, which is your passion? Which is my passion. Because when I started, I didn't know where it was going to lead me, but I gave up my 6-figure salary to do this. Okay. So it was a very big risk I was taking, but it is my success. See, success का नाम ही risk taking है. You have to take a risk. Exactly. कोई भी चीज में लेकिन डरते रहेंगे, बिल्कुल डरते रहेंगे, बैठे रहेंगे, then आप तो कुछ try भी नहीं कर सकोगे ना. बिल्कुल. Very nicely said. If you could get yourself anything, what would you get? कोई भी ऐसी चीज जो आपको पूरी दुनिया में allow है let's say लेना, what would that be? A thing though, it has to be a thing. Anything. जो कोई चीज है, I love shopping, shoes, handbags, but if I had to choose otherwise, is a holiday. I love going on holidays. Okay, सही है ना, holiday पे shoes और bag पहन के I love दोनों going sync on हो रहे holidays. हैं. Very nice. Lastly, I'm going to ask you, what is the most interesting thing you have in your purse? ऐसी कौन सी चीज कभी जो पर्स में से निकली और सबने बोला हो वाओ, कोई ऐसी चीज अगर आपको याद हो, या आप पर्स में ऐसी कोई चीज रखती हैं? To be honest, सबसे बोरिंग पर्स मेरा होगा. That means कि उसमें कुछ भी नहीं होता. नहीं होगा. Just your like normal cards stuff में mirror होगा, एक lipstick होगी, but nothing. कोई बोले oh wow आपके पास ये? No, I don't think so. Okay. Of course, I always have lychee seeds. Okay, so see, that's something like. I always have lychee seeds in my purse. It's a nice, for breath. I think. I love it. Yeah. I mean, gum तो होती होगी, but I always have lychee seeds. So that was amazing. Rapid fire round खेल के बड़ा मजा आया. आपको थोड़ा सा हमने मजीद जाना. So चलिए अपने मॉर्गेज के हम टॉपिक को दोबारा से जरा हिलाते हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आप ऑलरेडी शेयर कर चुकी हैं. मेरे ज़हन में एक और बात आ रही थी कि इस मॉर्गेज में लेट्स से कि मैंने मॉर्गेज ली एडवाइजर से और at the last minute I changed my mind. What are like the potential risks? Of course, देखो, there's 2 ways of looking at this. In this case, आपने ये पूछा, you changed your mind. मैंने mind change कर लिया. आपने घर लिया. There's 2 ways of looking. आपने घर लिया. देखो, when you buy a house, आपने deposit डाला. Remember when you bought a house, you put a deposit. You maybe 50,000, 30,000 or 100,000. आज के घर के prices, some people are putting 100,000 as deposit. There is a lot of risk. You cannot just walk away. Okay. First is you will lose your deposit. Oh. आपने जो घर लिया and आप बोले I don't want it anymore. You cannot walk away from it. You will lose your deposit. So deposit lose हो जाएगा पूरे 100%. Okay. And then there's a lot of legalities involved. Oh. Because when you signed it, you accepted that you are going to buy this house. And of course, there are always option up. You can say, आप मुझे 5 दिन दो to get my mortgage done, which is called a finance clause. ठीक है. But आज के market में, if you put a finance clause, you won't get the house because there's 10, 12 other people who want the same house. Right. So generally, जो आज के time पर जो हो रहा है, you have to go firm. You don't have an opportunity to say, I want a finance clause. So it's very important before you even go look at a house. Laila ji, you work with a professional like us to understand आप कितने से qualify करते हो. मेरी mortgage हो जाएगी. It is important before you even go out and look. It is important that an agent will tell you, yes, this is possible, but these might be आपको 5,000 extra down कर लोगे. Right. So देखो, an agent will always make you understand this. Very nice, very nice. थोड़ा सा हम अब इस वक्त जा रहे हैं closing of our show की तरफ. It is a vast topic actually. There are so many things. जैसे कि अभी आपने जिक्र किया है कि the client talked to you over the phone for an hour. And still अभी भी मुझे पता है कि उनके जहन में कितने सारे सवालात होंगे. So definitely हम आपको दोबारा भी invite करेंगे. Definitely, if you don't mind. Absolutely. So it was amazing, full of information. We really had amazing time with you and so do my audience. आपके साथ किस तरह अमृता राब्ता किया जाए? अगर आपका कोई पेज है, प्लीज ये रहा आपका कैमरा और अपना फोन नंबर अगर देना चाहें, and what timings will you be available? देखो, the best way to reach me is on my phone at 647-505-8643. देखो, you can call me at any time. I'll be happy to help. By any chance मैंने फोन नहीं उठाया, I'm on a call, I always tend to return the calls. I will always return your call, or feel free to send me a text message. There's no problem. I will return your call. देखो, you will always find me on Instagram. You can find me on Facebook. You can find me on LinkedIn. मेरी website भी है. You can reach me through
any of these avenues, absolutely, but the best way on my cell number 647-505-8643. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप ज़रूर अमृता जी से रब्ता कीजिए अगर आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल नीड्स मॉर्गेज से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, उनसे कोई भी चीज़ कंसल्ट करना चाहते हैं। शी हैज़ इमेंस नॉलेज इन हर फील्ड एंड शी इज़ लाइक मेकिंग लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ ईजी। सो यहाँ वक्त होता है हमारे शो के इख्तिताम का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। हैप्पी वुमेंस डे वंस अगैन। आप सब अपना ख्याल रखें। अपने पास आसपास जितनी लेडीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, आपकी मदर, सिस्टर, जो भी रिलेशनशिप है, ज़रूर उनसे कोई ना कोई अच्छी बात कीजिए, तारीफ़ कर दीजिए ताकि उनका भी दिन अच्छा बन जाए। फिर एक नए मेहमान के साथ अगले हफ्ते मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आवाज़ एंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।